Okay guys, so for this series, for the new episode of Glowing and Growing with K, I want to do something different because we have done bucket list, we have done fitness, we have done nutrition Q&A. So for this episode, I wanted to go out of my comfort zone and try a haircut. I haven't had a haircut in like 3-4 years guys, I know it's crazy, but I'm gonna get it done and I'm really excited. So I went on Pinterest as usual. I searched for different haircuts. The one that caught my eye were the layers and I wanted to get them for a really long time. So I'm like, this is God's ishara, I have to do it. I took some reference shots and it started all from there. So yeah, hopefully you'll enjoy the episode and let's go. This is my hair right now. Guys, hoping for the best. I'm in love. Stupid. Chote lage mere baal. This is the first picture that I showed. That's how you get this haircut. Hi guys, another day, another vlog. But this vlog is gonna be interesting because I'm gonna get haircut after ages. मैंने 3-4 years से haircut नहीं कराया, like proper haircut. And even trimming भी मुझे ऐसा लग रहा है मुझे 1 year हो गया मैंने trimming भी नहीं कराई है. And I'm really excited. I have something in mind. Layered haircut 90s में जो blowout वगैरह वो सारा मतलब I have this picture in mind. I'll keep the pictures here. I wanted this for myself. And I'm really scared because इतने टाइम से कुछ नहीं कराओ ना फिर कराओ तो थोड़ा सा डर लगता है कि how will it turn out and especially hair के साथ ज़्यादा डर लगता है. But I have faith. Today is gonna be a good day. I'm going to the gym right now and after the gym I'm gonna go there and get my haircut done. Let's get ready guys. Let's go. Praying and hoping for the best. Guys, look who's going with me. Sugar, are you gonna go with me? My cutie. Hi guys, I just got done with my workout. Now I'm gonna change and get ready. So let's go. I have 2 outfit options, but I think I'm gonna go with black. Let's see. Okay guys, I have the dress, but जो दूसरा option है guys, वो option out हो चुका है. So I have to wear this only. I think थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, but मैंने इसको tone down कर दिया with slides. I don't know if you can see, but I like how it's curves. Guys, washroom में नीलू जी और मैं हैं. Guys, नीलू जी मेरी washroom partner है. हाय तो बोलो, हाय बोलो ऐसे हाय. क्या क्या देखते हो ना आप यहाँ पर जिम के वॉशरूम में होते हुए? आप वीडियो बना रहे हो? हाँ, YouTube पे डालती हूँ आप देखना. किस नाम से? कृतिका खुराना. इसको गाइस ज़्यादा कुछ करने का टाइम नहीं है और गाइस मैं लाइनर लगा रही थी. आर्म वर्कआउट कर मेरा हाथ नहीं लिफ्ट हो रहा. मैं लिटरली ऐसे करके लिफ्ट कर रही हूँ. ओके गाइस, आई एम रेडी. लेट्स गो. This is the final look. नीलू जी approved. सही लग रहा है ना? This is my hair right now. कोई layers नहीं है, कुछ नहीं है. It's very simple, one length. Let's see how we change it. Let's go. Written down the words to say. It is time. I've been waiting 5 days to explain how you make me feel inside. Baby, got it all. Started finally. मैं आपको पता है मैं 3-4 years के बाद हेयर कट करा रही हूँ लिटरली. हाँ, ट्रिमिंग भी नहीं करवाई है मैंने. हाँ, कुछ भी नहीं कराया. तभी तो नीचे से डेड लग रहा है शायद आपको. गाइस, होपिंग फॉर द बेस्ट. Doesn't show, but my nerves are inside out. It's because you're not worth less than perfection. Ooh, thought it was in my pants, now I'm all confused. I love it. I'm gonna show mom one second. Hi guys, I'm back and I'm in love. I'm in love. मेरा haircut. Guys, इतने दिनों बाद मुझे ऐसा ना कोई change दिख रहा है अपने आप में finally, and I'm really like loving it. I love the layers. मैंने सोचा था मैं मम्मा को दिखाऊंगी. मम्मा is not at home. Yeah, that's it. I think दीक्षा को surprise कर सकते guys. Wait, guys, दीक्षा is here and I'm gonna show her my hair. सबसे funny होगा कि वो बोले कि क्या है, कुछ पता ही नहीं लग रहा है.
सिस्टर ये देखियो, ये देखियो क्या मेरा हेयर कट। यार मुझे पता था तो सबसे घटिया रिएक्शन दे। क्या है सच में तेरे को पता नहीं लग रहा? देख लेयर्स है और क्या है, लेयर्स ही तो है। लेयर्स ही है बट हेयर कट नहीं लग रहा देखो। हाँ लग रहा है ऐसा इतना वो चीज। स्टूपिड। What do you look nice सिसु? मेरे को लगा कलर डिफरेंट है कुछ। कलर डिफरेंट नहीं ऐसे नहीं लग रहा, मैं 5 years younger मुझे ऐसा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, काफी अच्छा लग रहा है। Thanks सिसी, thanks for the reaction now. अंजू कटिंग करवाई, छोटे लग रहे हैं मेरे बाल हैं, थोड़े वो तो जाते हैं। कैसे लग रहा है कट? लग तो अच्छे रहे। Thank God किसी ने तो ढंग का रिएक्शन दिया है। लग तो अच्छे रहे। Thanks। मैं पता है हेयर कट करा के सामने बैठी, आशीष सर ने करा था, मैंने बोला मुझे ऐसा लग रहा है मम्मा बैठी है सामने। लेंथ तो नहीं छोटी नहीं करी, जरा से नीचे से तो कटते हैं थोड़ा। मैं भी 2-3 दिन से सोच रही थी हेयर स्टाइल चेंज कराऊं, लेकिन मैंने कहा हाई छोटे हो जाएंगे। लेयर्स में होता है छोटे, बट उन्होंने बोला था मेरे को क्या कि ये इसकी वजह से ना वो डेंसिटी बढ़ जाती है, ऐसे लगता है कि हैवी है। हाँ है ना, लेकिन लेंथ तो डैड आप कुछ बोलना चाहेंगे? आजकल ये चल रहे हैं, ये अच्छा है स्टाइल, बहुत अच्छा लगा। नहीं स्ट्रेट से तो अच्छा है, इसको जैसे मर्जी पोनी बना, ऐसे कर वो कर। तू अगर ऐसे करके पोनी भी बनाएगी ना वो भी अच्छा नहीं, मैंने इतने छोटे नहीं कराए कि यहाँ से बाल आ गया है, बट हाँ ये ऐसे निकलेगा। हाँ अच्छा लगेगा। थैंक्स मॉम। दीक्षा बोलती क्या करा है ये, क्या क्या डिफरेंस है? कुछ इसको पता नहीं लगा। ज्यादा नहीं लेयर दी उसने, कम लेयर दी। मम्मा मेरे बिल्कुल स्ट्रेट थे बाल। नहीं आगे से ये दी है थोड़ी ज्यादा, नीचे से उसने ज्यादा, तूने कहा ना छोटे नहीं करो, तो उसने तेरे नीचे नहीं दी। और इसको अगर स्टाइल कर दो ना तो और बाउंस आ सकता है। बाउंस आ जाएगा। Hi guys, I came back from the salon and I wanted to show you guys how my hair looks. Guys, ये next day की clip है, enjoy. So this is the length right now. I don't know why. कल सबका reaction सुन के ऐसे लग रहा है जैसे मेरी length short हो गई है, but length उतरी की उतरी है, हमने short नहीं करी है। I love it. Like I feel like I look 5 years younger. I feel like. And if you want to know about the haircut, I got it from Gitanjali salon. There's only one guy I trust there. It's Ashish sir, and if you're going there, it's in Karkaduma, AGCR enclave, Gitanjali salon. And I'm gonna show you guys my reference picture. कल काफी different reactions थे सबके। दीक्षा मुझे पता था यही reaction होगा, ये कुछ हुआ भी है पता नहीं लग रहा। This is the first picture that I showed. इसमें ज़्यादा layers थी and he told me that अगर मैं ज़्यादा layer cut करूँगा मेरे face पे सूट नहीं करेगी। So मैंने long curtain bangs लिए हैं and next up I showed this. And I'm gonna keep both the things here and I absolutely love it. Ask for more layers, 90s haircut and long curtain bangs. That's how you get this haircut. I have a lot of layers. I don't know if you can see properly. And मेरे बिल्कुल single length था पहले and I'm loving it. Okay guys, that's it for the haircut vlog, glowing and growing episode. I love experimenting and trying out different things. I really want to get hair color done also. Let's see वो कौन से vlog में होगा. But with that, we're gonna end this episode of glowing and growing with K, and I'm gonna see you in the next one. Hopefully I'll get a tattoo or a piercing in the next one, but yeah, bye guys.